Hey everyone, welcome back to this streaming session again. And in this revision session, we have to just focusing on the most important JavaScript interview question. Okay, and this is a completely beginner friendly session. In the previous session, we have to just solve the 10 JavaScript interview question, but we don't completed it because the simple reason is just like the we have not getting enough engaged, so that's why I'm close that streaming session. But in this streaming session, I can't just doing a streaming for engage. In this, we have to just cover the all interview important questions that we have not completed in yesterday. Okay. And if you are excited about this streaming session, let me know in the comment section. Okay. And if you have any question, you can simply ask me. Okay. So I will just simply start that streaming session. Okay. My name is Raman and I'm a final year BCA student who learn in public every single day and posted the content and go live. Okay. And I doing this thing until I getting placed. Okay. And I think we have getting a referral. So there is so many chances ki we have getting an interview on tomorrow. Yeah, on Friday and Saturday. Between Friday and Saturday, I think we have getting an interview. So we have to prepare for that. And this is a front end job interview, front end job. Okay. So mainly I'm focusing on JavaScript because if you are targeting front end job, the job description is mainly they asking you front end asking a JavaScript. Okay, so that's why I'm focusing on JS. So here is our Chrome, and you know that in the previous session we have to just focusing on that interview JavaScript question that will be given by Claude. Okay, and we have covered the almost 10 questions. Okay, from this I think the difference between a function declaration and function expression. From that we have covered the all topics, and now we have just started from question number 11. Okay, I will just simply open my code editor and I will just show you that how many that you can simply see that we have solved the question number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. So we cover almost a 10 question. Okay. And if you are, can you just, if you anybody who's just watching that simulation, can you just simply let me know in the comment section, is my voice quality clear to everyone? Because I have getting cold last night, so I think I am struggling to speak. So can you understand that what I'm trying to say? So you can simply let me know in the comment section. Okay. So by the way, I just starting that streaming session, right? So, and between the streaming session, if you have any question, ask me in the chat, okay? Because I will be checking the chat between 10 to 15 minutes, okay? So I will be sure see the chat and reply it according to my knowledge, okay? So here it is, and there is a Chrome, okay? And the next question is, how do you create an object in JavaScript? Okay, this is a very basic question. Okay, it will be simply show that an object can be created using a object literal. Okay, in object is just like they will be storing our data into a key values pair. So you can simply see that I will be don't directly copy paste. I will simply creating a const question number 11. Okay, let obj and here is using these brackets. Okay, it's a curly brackets and name is Naman and or just like the age my age is not 30. It will be like my age is 21. Okay, and the next is what is grid. Okay, grid is a function that we have simply write down there. We write any function. Okay, you can use any name. Okay, I just use a grid and they will simply log hello. Hello, ठीक है. This is an object, ठीक है. We have passing the key values pair, ठीक है. And here that is a default function that will be called, ठीक है. And now this is a constructor function. Constructor function क्या होता है? It will be a function person and it will be taking a two argument. This dot name is equal to my name and this dot age is equal to my age, ठीक है. And that will be taken from this object literals and const person two is equal to my we have simply creating a const person2 and new person dot alice and 24 ठीक है तो इसमें क्या होगा सिंपली ये हमारा एक ऑब्जेक्ट लिटरल है ठीक है यहाँ पे कर लेते हैं वी हैव दिस इज आवर ऑब्जेक्ट literals this is an object literals and we have this simply creating an object this is a constructor function ठीक है
constructor function, we have constructor function, and there is a let. We have using a let const anyway, const person, and in person we have just simply, and we simply pass the name and age. Okay. Here it is a name and age, and we have simply like a name dot this is equal to my name, and age dot this इसमें हमारा आ जाएगा एट डॉट दिस इज इक्वल टू में एज. ठीक है. Here it is, and this dot age होता है. I think this dot age हो जाए, we have getting the wrong thing. This dot name is equal to में name. This dot age is equal to में age. ठीक है. Okay, it will be not an arrow function, so we have to write a function keyword. And now person. ठीक है. And यहाँ पे हमें ये objective का value pass to कर रहे हैं. So I think now it's everything perfect. And now we have to simply creating a function and write a const to and const a person to, ठीक है, a person to, and person to is just like simply a person, and in person we have simply passed the two things, ठीक है. Our name is Naman, not a Naman, just like कि we have यहाँ passing a code x num, and age is one, ठीक है, and simply go to there and print the person, ठीक है. You go to there, and first thing I just need to check the output. No? So simply I go to this index.html file and run on the server, and let's just check that what the output we have received. Okay. So here it is responsive console. ठीक है. It's given and undefined. Okay. Undefined. Okay. So it's we have to need to write a new keyword. Okay. New keyword तो हमें use करना था. Okay. Yes, it's clear. Which topic? Bro, I am maybe focusing on a JavaScript object topic. I'm preparing for a front-end interview, so that's why I'm focusing on that. Okay, yes, it's clear. Okay. I am Shrikant. You thanks for that comment. You have just my voice is clear. Okay. So you can simply see that in this particular code base, we have to understand that there is an object. This will be an object literal. This will be a simple object. Okay. And this is a constructor function that we have simply created a function, and it will taking a two argument, and they will be not written anything. They just like key what we have a right in the name, it will be getting on there. And this is the, okay, this is an object. And say person two, we have simply passed the value and it will be object is created. And person three, object dot created null. So we have to just like कि what is the meaning of that? ठीक है, this is the const person three and object dot create null. So first thing क्या करते हैं? We simply copy that code and understand that what is it. ठीक है, you go to JS. ठीक है, it's a variable C and object dot create null. So I think they will simply created an empty object. Okay, what we have just print that code. I simply go to there and print that code. Log
tab, and person 3. And I simply go to that output screen, and you can simply see that it will be simply created a empty object. Okay, this is okay. So what we have understand in that code, question number 11, key how we can create an object and how we can creating a constructor function where we have stored the data as a function. Okay, you can simply say that this is a function, and what we if we have to creating an one function mode, so I simply go to there and copy this, okay, and paste it there. And the person two is now person three, and we have using a codex num and using a Rohan and random name, and this is a person three, okay, and person three is there, and this is a Rohan, and this is an age will be I think a 19. Okay, so I simply go to that output screen, and here you can simply see that our another object is successfully created. Okay, so that is a object, and you just need to understand that object is just like key. If you it will be store the data into a key values pair, and it will be follows the key reference. Okay, if you have to just store the data, ठीक है, so ये हमारा हो चुका है, and now we just simply comment this entire code, and our question number 11 is also completed. Now just moving to question number 12. Here is the question number 12, and I go to there. By the way, you are just watching the streaming session, so can you let me know in the comment section how was your JavaScript interview preparation going? JavaScript की तुम्हारी preparation कैसे चल रही है? How was going that your JS interview prep? Question number 12 क्या है? What is the difference between null and undefined? Okay. A null is a intentionally. Okay. What is the difference between a null and undefined? Null is a intentional assignment of no value. Undefined is the absence of a value. Variable not initialized missing parameter. Just like कि a is equal to मैंने initially empty. B is equal to में undefined. ठीक है? Because we have defined a null, but यहाँ पे कोई value डालेंगे तो it will be showing as a undefined. ठीक है? And console.log a is equal to में null. And b is equal to में undefined. That's it. ठीक है? And function dot touch dot param and console dot param undefined if not passed. Okay. So null और undefined क्या होता है ये समझ आ चुका है आपको. ठीक है? I will simply copy this, go to VS Code, question number 12 and paste it. And you know that कि we have saved the value of null. ठीक है? So हमने उसको intentionally मतलब हमने अपने intentionally के through we have to make the a variable into a null. So whenever we have print that it will be given a null. But let b is a variable we have we don't define any value. So that will be treated as undefined. So here it is. ठीक है? And now question number 12 is also completed. It's a very easy. Now moving to question number 13. Question number 13 is there. And question number 13 is what is the difference between shallow copy and deep copy? Shallow copy is copy only the first level. Nested object are referred. Deep copy recursively copy all levels. ठीक है? Shallow, इसमें क्या किया? It will be just taken an entire object because we have using a spread operator to spread that all the data into a shallow and shallow dot address dot city, and we have simply targeting the address and city will be a LA, and whenever we simply control the city so it will be a okay, because we have targeted and changed the original value. But what is a deep copy? In deep copy we have just a const a deep a json dot parse, okay, stringify and original, okay, deep to city, uh, it will be okay. LA will not affect it, and इसका रीजन क्या होगा कि हमने स्ट्रिंगिफाई कर दिया. व्हाट इज अ डीप कॉपी? एक काम करेंगे थोड़ा इसको इस कोड को थोड़ा अच्छे से समझते हैं. वी आर सिंपली गो टू दैट चैट जीपीटी, go to that new chat, and what is deep? It is a deep copy in simple way.
ठीक है, आप simply enter that and here it is. Okay. Okay, currently we have getting a zero views. How we can create an object and how we can creating a constructor function where we have stored the data. Okay, but no problem. We have today's in today's streaming we have not focusing on a views. Okay, I don't focusing on a views. I will be focusing on an improvement. Okay, because I will believe that if I'm just focusing on the regular based content and if I'm not getting still enough no views and if I'm doing live, that's also a positive side because I'm still consistent. Okay, so it's okay. We not getting views right now, but okay, I will be doing a streaming continue again. Okay, no worry. Okay, we have getting not enough impression, but we have still go live. So now just moving to the next question, ठीक है? And just like कि next question से पहले हमें ये समझना होगा कि what is use of uh, deep copy, ठीक है क्या? Deep copy means making a completely separate copy of an object, ठीक है? Including all nested object inside of it. So original copy is a one box. Deep copy a totally new box with its own item inside. ठीक है? Deep copy क्या है? Deep को original object होगा. Deep copy क्या कर लेगा? That will simply created a new box with its own item inside. ठीक है? Your code is just like a deep JSON dot stringify. Fact is a deep is a fully separated object. ठीक है? Address inside it, it is also a new copy, also linked to original. Easy way to remember shallow copy. Copy of top layer only. ठीक है? Nested will still connect you. Okay. Deep copy is ultimate copy everything, no connection at all. Shallow copy क्या है वो टॉप लेयर की कॉपी बनाएगा स्टिल कनेक्टेड एंड डीप लेयर विल बी कॉपी एवरीथिंग नो कनेक्शन ठीक है रियल लाइफ ओरिजिनल योर नोटबुक एंड डीप कॉपी a photograph of every page. Okay, if you write on photocopy original book stays in ठीक है here it is deep and this is a deep copy and json dot parse and json dot stringify ठीक है json dot parse and json dot stringify original ठीक है हमने वहां से लिया डीप डॉट एड्रेस को सिटी कर दिया और वहां से वो कर दिया जब भी प्रिंट करेंगे द वैल्यू विल बी चेंज बट इट विल बी नॉट शोइंग इट टू ओरिजिनल आउटपुट बिकॉज व्हेन वी यूजिंग अ json डॉट parse डॉट stringify it will be created empty मतलब a duplicate array of object okay go to there and question number 13 here it is ठीक है original bounce shallow original shallow dot address dot city is equal to melee console dot log original dot address dot city पहले affected okay this is a deep copy with creating an empty ठीक है now just moving to the next topic ठीक है the next is simple and the next topic is how do you using merge to object answer using spread operator or object assign ठीक है spread operator and merge to इसका object dot assign and it's an empty object ठीक है ठीक है ऑब्जेक्ट को मर्ज करने के लिए we have to merge the object question number 14 and question number 14 is just like कि how the const is ठीक है क्या करते हैं we simply copy that object and merge it ठीक है so there is a two object and if we have to merge that const merge and dot 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 is a spread operator and obj1 comma obj2 ठीक है
मुझे पता है पूरा नहीं आया, क्योंकि वी हैव आई डोंट I spread only operator one. ठीक है, I spread only object one, not object two. So here it is, and using the spread in there also. ठीक है, here it is. I simply write the three dot, and our object two is also spread. And now just moving to the next topic, object assign. ठीक है, object assign क्या करता है? I think this is also a built-in function that is simply used to merge an array. ठीक है, क्या करते हैं? Merge one, merge one, object dot assign and object uh, obj1 comma obj2 and go to their screen, and here I can simply see that hello bhai, or what bro, today in today's streaming session I will be focusing on the JS interview question. I will be focusing on JS interview question, by the way. Okay, and this will be created, and now just moving to question number 15. Okay, by the way, we have getting a reference, and there is so many chances I getting an interview on a Friday or a Saturday. So I will simply preparing for that interview. Okay, can you understand that what I am trying to say? Because just like or the last night, I'm getting a cold and I'm struggling to speak. So if you understand that my voice, let me know in the comment section. Okay, so now here it is. Uh, 14. Okay. Question number 13 is completed, and question number 14 you can simply see that how do you merge two objects? Okay. We can merge the two objects using the two method. Okay. This is the method first. We have simply doing a spread operator. This is the spread operator, and this is the second method, that is the object dot assign. That is a built-in function that we have given by our object, and simply that's it. Okay, and now just moving to what are the array method. Okay, if you are learning an array and if you know that this भाई 10th में हूँ, ओके ओके, आई विल जस्ट सिंपली रीड दैट चैट. ओके, भाई 10th में हूँ, कुछ नहीं आता मुझे, यू फुल स्टैक बनना है. If you want to becoming a full stack developer, if you are still in 10th, so there are so much golden opportunity है तुम्हारे लिए. तुमने बहुत सही टाइम पे चुना है. If you are still in 10th, go to that YouTube channel and choose any full stack web development course. Complete that course, and just like watching, just spend daily 1 to 2 hours consistently. And once that course is completely, just you have good enough in that particular skill, just watch the tutorial and building some projects. Okay. Just if you want to becoming a full stack, and if you want कि I will be give you good resources, ठीक है, good resources that where you can preparing for a full stack. So मैं तुम्हें वो भी suggest कर सकता हूँ, ठीक है. And तुम चाहो तो नहीं तो खुद भी ढूंढ सकते हो. You can simply go to that YouTube and just ask that give me the best resources to learning a full stack development. Okay. आपने शेविंग करवाई है क्या? नाइस लुक्स. हाँ, शेविंग करवा लेता हूँ, क्योंकि मेरी जो बियर्ड आती है वो थोड़ी वैसी आती है, पैची बियर्ड. सो दैट्स वाई कि मैं मतलब 2 हफ्ते में एक बार क्लीन कर लेता हूँ. सही लग रही है ना वैसे तो? क्लीन कर रखी है अभी, है ना? अपना कॉलेज ना, देखो अपना कॉलेज इट्स द बेस्ट. ठीक है, अपना कॉलेज तुमने सुना होगा बहुत बार, ठीक है, लेकिन आई विल बी नेवर, मैं तुम्हें सजेस्ट नहीं करूंगा कि लर्निंग अ फुल स्टैक डेवलपमेंट फ्रॉम अपना कॉलेज इट विल बी अ गुड चैनल. बट आई थिंक इफ यू हैव टू लर्निंग अ जावा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, you can prefer a virtual code YouTube channel, because I am learning my backend from a virtual code. So you can just jump to that virtual code. It's a best YouTube channel for learning uh, full stack. ठीक है, full stack के लिए virtual code YouTube channel है कि simply go and there are full stack web dev course where you have learning HTML, CSS, JavaScript, React, Node, Express, MongoDB, Next.js, and everything. So you can simply follow that a virtual code YouTube channel. This is a great YouTube channel for you if you are a completely beginner. कोड विद हैरी भी जस्ट लाइक कि ठीक है, ये सारे बहुत टॉप हाइपर है.
बट मैं तुम्हें बेस्ट टीचर सजेस्ट करूँ तो ना, ये छोटे कुछ कुछ छोटे क्रिएटर्स भी है जो भी ठीक ठाक बनाते हैं। सो वर्चुअल वर्चुअल कोड, आई विल बी जस्ट सिंपली गो टू, डोंट वरी, आई विल शो यू दैट, ठीक है। ठीक है, this is a YouTube channel, ठीक है? It will be created a full stack web development course, and I will be learning backend from that YouTube channel. And the method of teaching of that teacher is very great, so that's why I will be prefer you that YouTube channel. And they also give you free resources, free notes that you can use to revise the concept. So you can simply go to that virtual code. By the way, what's your name is? Nodul, yours, what is your actual name is? What is your actual name is just like the Nodul, you can simply go to that YouTube channel, and here is a course section. This will be created on 9 videos of complete web development course. If you complete that course, you are enough good in the web development and you can just building any web application. ठीक है, क्योंकि the method is very अच्छा है, काफी अच्छा method है। The method will be बिल्कुल हिंदी में समझा रखा है, बहुत plain हिंदी में, ठीक है। So you can follow that YouTube channel. हाँ, आई विल बी बिल्डिंग अ प्रोजेक्ट फॉर माई कि मैं जिम वर्कआउट वगैरह भी करता हूँ, सो लक्की इज माय नेम। ओके लक्की, सो जस्ट लाइक कि लक्की, आई बिल्डिंग अ फुल स्टैक जिम मैनेजमेंट सिस्टम फॉर माय जिम ट्रेनर, ठीक है। मैंने मतलब जिम ओनर के लिए बनाई थी मैंने एक ट्रेनर वेबसाइट, ठीक है। उसके लिए मतलब कुछ पैसे मिले थे, पैसे की जरूरत नहीं, मतलब बहुत कम ही दिए थे, तो मैं तुम्हें बता नहीं रहा। बाकी मैंने उसके लिए प्रोजेक्ट बनाया था, अब तक से मेरा एक वही फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट है। ओके, चलो थोड़ा बाकी थोड़ा बहुत कर भी लेते हैं, बात ज्यादा हुई है। एंड हेयर इज व्हाट आर एरे मेथड, यू शुड नो दैट, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, अ मैप फंक्शन फिल्टर रिड्यूस फॉर ईच फाइंड सम एवरी और शॉर्ट मेथड। दिस इज द most useful and most important array method that you should need to know, to just like if you know that this how you can use this method, you are good enough in JavaScript arrays, ठीक है, because this is the most important built-in function. So what I can do, simply I copy, not no, what I'm just not copy it. I simply go to the create an empty array, ठीक है। Here is a question number 15, and I created a simply empty array. Let arr, ठीक है, let arr, and the value will be 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ठीक है, 60, 70. And now just use the all this method. The first method is, what is map method? Map method is just used to transform the each element of an array. So अब क्या करेंगे? I will be go to there, and just like कि arr, ठीक है, arr dot map, ठीक है। और मैप के अंदर क्या करेंगे? Val multiply by 2, ठीक है। Here is a map function, we are simply using that. एंड इसको क्या करेंगे, इसको एक जगह ले लेंगे, यहाँ पे हम लेट डबल not answer that ans, ठीक है, let ans is there, and I simply print the log and print the answer there, and I simply go to that my output screen, and what the output I can just getting from this, well is not defined. ठीक है, you can simply see that the array, the filter will be transform each of element, ठीक है। ये क्या था ब्रो, जस्ट लाइक कि आइडिया मतलब मेरे को खुद से ही आया कि आई विल बी जस्ट लाइक कि जिम में था और सोचा कि वो बंदा ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देता है, तो उसके लिए कुछ मैनेजमेंट सिस्टम बना देता हूँ। सो आई विल जस्ट सिंपली अप्रोच देम कि मैं ये प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, एंड इफ यू नीड कि आई कैन बिल्ड फॉर यू, एंड दे जस्ट सिंपली एग्री विद मी, एंड आई विल सिंपली क्रिएटेड वेबसाइट फॉर द हिम, सिंपल।
आइडिया तो ऐसा कुछ था नहीं, बेसिक जिम मैनेजमेंट सिस्टम है, कुछ ऐसा तगड़ा आइडिया तो नहीं था, बेसिक सा ही आइडिया था। सो यू कैन बिल्ड इट एनीवेयर, ठीक है। वंस यू हैव प्रॉब्लम, तुम्हें एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है, ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है जो एक प्रॉब्लम सॉल्व करे, दैट्स इट, ठीक है। एंड इफ यू हैव एनी आइडिया, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करो एंड योर प्रोजेक्ट विल बी क्रिएटेड, ठीक है। आइडिया तो अपने आप आ जाएगा। इफ यू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, इट विल बी, it is an idea, ठीक है। if your you can fix someone's problem, that is your idea. Okay, and here is an array that will be transform each of element of an array, and this is I simply copy that code, ठीक है, because if we have just doing one by one, it will be taking so much time. So I simply remove this, paste this code, and now just understand that, ठीक है, इस अब क्या होगा। Map, this will be transform each element of an array, ठीक है। दिस इज अ डबल वेरिएबल एंड नंबर डॉट मैप, ठीक है। सो हम इसमें क्या होता है कि व्हेन अवर अ यूजर n का जो वेरिएबल है, इट विल बी गेटिंग एंड इट विल बी मल्टीप्लाई by every element, ठीक है। इट इज अ 1 2 3 4 and it will, you can simply say it will be out of, if this is the output if I print that double variable. It's like कि before, due to the code, I will be really struggling to speak. By the way, you can understand that my voice. By the way, I will just feel that I will be speak so fast. Well is not defined. Need key I can build for you, and they just simply agree with me, and I will simply create it a website for the him. Simple. Okay, voice is clear, but just like कि थोड़ा slow बोलना पड़ेगा. Okay, and now just moving to that this, and this is a map function. And now what is a filter? Filter is just used to filter the element of array, ठीक है, where you have just simply filter will be also only print those values that will be satisfy a condition. In this program, you can see that we have created a function that will be, if the number is will be divisible by 2 and the value will be equal to 0, then you print, then it will be a filter, otherwise not, ठीक है। Double will be created and not will be change existing array, ठीक है, ये नए array पे करता है हमें, ठीक है। And this is events, ठीक है। They will simply print the even number, and reduce is just used to make the combine the element of an array, ठीक है। पूरे array को combine करना, तो यहाँ पे क्या आया, सम आया, number dot reduce and account मनी n and acc प्लस में n, ठीक है। हर एलिमेंट यहाँ पे आता रहेगा और वो उसके अंदर प्लस होता रहेगा, और ये जीरो के अंदर काउंट हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। एंड व्हाट इफ वी आई जस्ट सिंपली print the sum, go to that log and go to sum, and let's check the answer is 15. And what if we have simply removed the 0 from there, output will be still 15, because I don't think they did it, that's why I'm just removing that. It will be a current value and this will be a next value, ठीक है। अब ACG मतलब जैसे लाइक कि इसको तुम करंट कर लो, ठीक है, इट विल बी सिंपली मेकिंग द कोड, ठीक है, इट्स अ करंट वैल्यू एंड दिस इज एन एंड, ठीक है। इसको भी यहाँ पे सीयू करंट वैल्यू, ठीक है, इट्स अ करंट और नेक्स्ट वैल्यू, करंट वैल्यू प्लस में नेक्स्ट, go to again current plus में next, and now the output is simple of 15, ठीक है। this will be reduced is completed. Now the find is get first matching element, ठीक है। Find is just used to find the first element of an array. If you have to just find the any name, just like it's a thing ना, तो एक काम करते हैं, कुछ ऐसा ढूंढते हैं, n है ना, जो n जो है इक्वल इक्वल हो 3 के, ठीक है। n इक्वल इक्वल 3 में हो तो उसको उसमें 3 कर देना प्रिंट। सो आई थिंक इफ आई जस्ट सिंपली कमेंट क्या, आई विल सिंपली रिमूव दिस एंड प्रिंट द फाउंड, ठीक है। print the found here, ठीक है, print the found here, and you can see that I simply go to that output screen and it will be give me a 3, because I will be find that if the value will be 3, and what if I simply go there and write a name is a Naman, ठीक है, and if so you can simply see that it will be printed a Naman, ठीक है। But what if we have using a n, so you can simply see the output will be undefined because it will not find any element of using a number, ठीक है। So here it is, I will simply remove this. Okay, my system getting lag. Just wait a few seconds. I think it will be a fixed. ठीक है।
इसको यहाँ से रिमूव करते हैं एंड नाउ this will be complete. And what is sum? Sum is just like check if any element match. ठीक है, it will be check the element match. ठीक है, if n is equal to it will be a written only a value in a true or a false. ठीक है, it's just like कि अगर n जो है currently value if we have divisible 2 by 2 0 it's a true or true and इसने हमें true दे दिया. ठीक है, and every will be used to check the every element of an array. ठीक है, it's just like every is n is equal to it क्या, so ये check कर रहा है is every is all element is more than zero. What if we have simply print write down minus 4? Okay, it will be a less than zero. So when we I just simply go to that and print the not a print log all positive. So it will be written a false. Okay, it will be a written false because one element that the value will be a minus 4. And if I go to there, and now it's giving a true. Okay, here it is. Okay, this is the very easy. Now just moving to the next. Hey chat, if you understand that what I will be just revising right now, if yes, let me know in the comment section, and if you have any doubt, you can ask me in the chat. Okay, because I will be reply all of your comments. Okay, so you can simply ask me in the comment section. Okay, so now I just moving to the next topic. Question number 15 is completed. Here it is, question number 15 is completed, and I simply comment that. Okay. Now just moving to question number 16. And question number 16 is, let's check that what is question number 16 is. This is a very like ki basic question, but I will be just like ki after that few that it will be improve and just change question. ठीक है, थोड़े अच्छे खासे क्वेश्चन पूछेगा ये हमसे बाद में. आपने तो काफी इजी है बाय द वे. ठीक है. Question number 16 is like, what is the scope in JavaScript? Okay, scope determine the accessibility of variable, types, global function, block, and lexical scope. Okay, and a let is a global where value will be a global, and function is a my function, and variable value is my function. If true, let if the true is what कि if block where को ब्लॉक कर दो एंड कंसोल डॉट लॉग ग्लोबल वो फंक्शन ब्रो. ठीक है, ऑल एक्सेसिबल कंसोल डॉट ग्लो एरर ब्लॉक एवर इज नॉट डिफाइंड. ठीक है, ब्लॉक ब्लॉक वेयर को क्यों दिखाएगा अनडिफाइंड, बिकॉज इट विल बी अ ग्लोबल. ठीक है, ये क्या है, ये हमारा फंक्शनल स्कोप है. ठीक है, ये जो है ये हमारा लोकल स्कोप है. तभी हमने यहाँ पे ब्लॉक को एक्सेस करने की कोशिश किया तो ये नहीं आएगा. लेकिन व्हाट इफ वी ट्राई टू कि अगर हम फंक्शन वैर को भी ट्राई करेंगे, आई थिंक दे विल स्टिल गिव एन एरर. ठीक है, ऐसे काम करेंगे. यहाँ पे सबसे पहले तो इस कोड को प्रिंट करते हैं एंड गो टू द आउटपुट स्क्रीन एंड लेट जस्ट चेक दैट व्हाट इज एन आंसर इज. तो पहले फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा. ठीक है, माई फंक्शन इसको कॉल करा एंड गो टू दैट एंड हियर इज अ ग्लोबल फंक्शन ब्लॉक. ठीक है, ग्लोबल फंक्शन ब्लॉक, ग्लोबल फंक्शन ब्लॉक. ग्लोबल फंक्शन ब्लॉक क्या है, ग्लोबल ये रहा. ठीक है, फंक्शन आया, ब्लॉक आया. ठीक है, हमने ग्लोबल ये ग्लोबल को हमने एक्सेस कैसे कर लिया, वी कैन एक्सेस इट बिकॉज ग्लोबल जो है वो लेट है. ठीक है, उसको हमने बाहर डिफाइन कर रखा है, सो एनीवन कैन एक्सेस इट. सो ये हमने इसके अंदर स्कोप कर लिया. माई फंक्शन है, माई फंक्शन भी इसके अंदर आ गया क्योंकि इट विल बी अ पास इनटू अ ब्लॉक ऑफ स्कोप. ठीक है, एंड जो ब्लॉक वो है ये इसके अंदर है. सो ये ऑल एक्सेसिबल बिकॉज इट विल बी कम इन दिस इज अ ग्लोबल स्कोप. हमने इसको यहाँ पे एक्सेस कर लिया, ये दोनों ब्लॉक स्कोप है तो हमने यहाँ पे कर लिया. इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे क्योंकि इट विल बी अ ब्लॉक स्कोप. ठीक है, इट विल बी अ लोकल वेरिएबल नॉट अ ग्लोबल, दैट्स व्हाई. ठीक है, अगर मैं इसी के अंदर एक काम करूं, मैं यहाँ पे माई फंक्शन है कंसोल लॉग डॉट, तो ठीक है समझ आ गया. ठीक है, बाय द वे इट्स वेरी इजी. इन दिस कोड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट लेक्सिकल स्कोप की फ्रॉम वेयर वी कैन जस्ट एक्सेस दैट एलिमेंट एंड फ्रॉम विच प्लेस वी कांट एक्सेस दिस. ठीक है, ओके, वी हैव गेटिंग अ चैट, लेट मी जस्ट रीड दैट चैट.
My coding is done and solving things now by AI. You start focusing on system design. Just look at what Sam Altman and Elon Musk said. You will not be hired for your coding skill in the next few months. Bro, I'm totally agree with that. If I go to hire it, I will be focusing on a system design and using an AI tool to in my workflow and just make the things faster and effective. Okay? But I will be focusing JS interview question because आई हैव गेटिंग एन इंटरव्यू ठीक है 2 से 3 दिन के अंदर मेरा इंटरव्यू होगा दैट्स व्हाई आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट माय इंटरव्यू ओके एंड आई एम टोटली एग्री विद दैट ठीक है एंड यू आर टोटली करेक्ट ठीक है आई एम टोटली यू आर टोटली करेक्ट कि ऐसे मैनुअली कोडिंग करना और ये चीजें करना इट विल बी रिप्लेस बाय एआई सो बट ऐसा नहीं है कि मैं एज अ खाली मैनुअल कोडिंग करता हूँ आई विल बी आल्सो कोडिंग आई विल बी कोड यूजिंग एन एआई टूल ठीक है मैं एंटी ग्रेविटी यूज करता हूँ व्हेन आई बिल्डिंग अ प्रोजेक्ट एंड सिस्टम डिजाइन भी मैंने अभी पढ़ना शुरू किया था पर बीच में छोड़ना पड़ा क्योंकि एग्जाम्स आ गए थे सो मैं उसको भी कंटिन्यू करूंगा बट अभी जो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ इट विल बी बेसिकली फोकसिंग ऑन अ इंटरव्यू ठीक है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग मैं पढ़ रहा हूँ अभी मेरा फ्रंट एंड का एक इंटरव्यू है दैट्स के लिए मैं पढ़ रहा हूँ बाकी ओके ब्रो लूसीफर लूसीफर वाओ नाइस नेम लूसीफर लाइक अ लूसीफर का वाओ आई एम टोटली एग्री विद दैट ठीक है बाय द वे वेलकम टू माय स्ट्रीम एंड जस्ट गिव मी अ वेरी हेल्पफुल सजेशन एंड आई थिंक इट्स अ वेरी यूजफुल फॉर मी बिकॉज आई एम टोटली एग्री कि जो सिस्टम डिजाइन है उस पर फोकस करना ओके गुड लक ऑल द बेस्ट थैंक्स ब्रो थैंक्स लूसीफर थैंक्स फॉर योर बेस्ट ऑफ लक ठीक है क्वेश्चन नंबर 16 भाई अरे भाई थैंक्स भाई भाई आ गया तो मतलब वेलकम टू माय यू आर माय भाई 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 ठीक है नाउ जस्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16 is completed and now what is question number 70 is what is the this keyword ठीक है this refer to the object that the function belong to determined by how the function is called ठीक है फंक्शन को कॉल्ड कैसे कर रहा है कॉल कैसे कर रहा है दिस कीवर्ड का ठीक है you know that in ES6 we have using a arrow function and arrow function में हमें क्या करते हैं the syntax will be simpler and easier and you have to write a shorter code ठीक है but in arrow function they don't have a this keyword so simply I copy that code go to that chat go to that my code editor it's a question number 17 and paste it ठीक है there is a console log dot this and it will be a window browser or global node.js ठीक है it's a basic object a name this is a function ठीक है this is a very basic thing ठीक है this is an object and we simply call that object dot create and whenever this like object dot create it will be simply print that this dot name and the name will be John ठीक है and it's a constructor person this dot name and when we have simply go to p node dot person Alice ठीक है p dot name और वहां पे Alice आ जाएगा ओके सब आई थिंक ये हो जाएगा ऐसा कुछ कोड में तो कुछ है तो नहीं खतरनाक सा कि मतलब क्या है जस्ट चेक करते हैं सबसे पहले चेक द गो टू दैट आउटपुट एंड लेट्स सी द व्हाट द आंसर वी हैव ठीक है दिस कीवर्ड क्या होता है इट विल बी विंडो कीवर्ड जिसमें हमें विंडो के जितने भी हमारे पास मेथड्स होते हैं दैट विल बी गिवन बाय अ ब्राउजर दे विल शो एवरीथिंग हियर ठीक है एंड नेक्स्ट इज जॉन और एलिस ठीक है जॉन और एलिस कैसे आया नाउ अंडरस्टैंड दैट दिस थिंग ठीक है solving question in coding at website solve question in coding bat coding bat it is a website for preparation coding preparation just like where is the coding bat I will be here first time coding bat kya hai? I think in coding bat we have only practicing on Java or Python where is bro can you just use it and practicing JS questions on this platform because they will just showing a Python or a Java only. Okay, bro. The coder guy, they will be just simply show me practicing in a Java or a Python. I'm practicing a JS, so I think let's go. I will just let's go, but can you just you know that key it will be practicing by a Java or a Python, and I will be practicing JS. So I don't think that this platform is good for me currently right now. Okay.
And let's go to their code editor and you can simply see that इसके अंदर हमारे अंदर विंडो ब्राउजर के अंदर जो भी फंक्शनैलिटी होती है दे विल बी सिंपली प्रिंटेड देयर एंड दिस इज एन ऑब्जेक्ट जिसमें हमने एक नेम दे रखा है नेम की हमने वैल्यू दे रखी है एंड दिस इज अ फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट डॉट ग्रीट को हमने फंक्शन कॉल कर दिया एंड इस फंक्शन ने क्या किया दिस से हमें जो उस लोकल स्कोप है उससे उस नेम को टारगेट किया और जोन हमें यहाँ पे प्रिंट करके दे दिया एंड यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर बनाया एंड फंक्शन डॉट नेम एंड नेम की वैल्यू जो थी नेम कर दी ठीक है एंड वट एवर अ यूजर कॉल दैट फंक्शन न्यू पर्सन and this function is called and we putting that value and when we console.log p dot name and it will show the alias ठीक है and एक काम करते हैं we have creating in another function a function or a function we have using a const new user and we have creating a new person constructor and simply pass the value of num and whenever I simply go to that console dot log p dot not a p dot new user dot dot name and I simply go to there and it will be give me a number. Okay. Why are you using the browser to see the output? You can see them in the console itself. हाँ ब्राउजर पे भी देख सकता हूँ तो ब्राउजर पे ही देखूँ मतलब अभी HTML से कर रहा था शायद इसलिए that's also good idea एक काम करते हैं ना इसको इंटरव्यू क्वेश्चन ठीक है CD node script dot js एंटर हाँ हाँ, ठीक है टर्मिनल पे देख लेता हूँ इसको टैब को क्लोज ही करता हूँ एक्चुअली वेस्ट ऑफ टाइम है वैसे सही सही बोला क्रॉस ही कर लेता हूँ ठीक है यहाँ पे भी हमें दिख रहा है थैंक्स फॉर सजेशन अभी जो लास्ट टाइम में मैं कर रहा था ना तो उसमें ये था कि इनपुट आउटपुट भी ले रहा था मैं प्रैक्टिस करते समय सो मैं उस समय एचटीएमएल यूज कर रहा था लेकिन इसने सजेशन करे हैं तो कोड विल भी मैं उसको ऐसे अपने टर्मिनल पे भी चेक कर सकता हूँ ठीक है हम्म एक काम करता हूँ नेम की ना न्यू यूजर डॉट नेम एंड नेम को क्या करते हैं कोड एक्स नम एंड प्रिंट द log is new user dot name देखा तो नेम भी चेंज हो चुका है ठीक है it will be change the value into an existing object okay now question number 17 is also completed now just moving to question number 18 ठीक है चलिए छोटा हो गया ठीक है ये सही है clear clear and go to question number 18 ठीक है now just moving to question number 18 क्वेश्चन नंबर 18 क्या है क्वेश्चन नंबर 18 what are the way to see this explicitly ठीक है explicitly answer is using call apply and bind method function greeting and punctuation console.log greeting plus में comma this name dot punctuation ठीक है and const person name John ठीक है call execute greet dot call person dot hello it will be simply print the output is hello and John ठीक है ग्रीटिंग की जो वैल्यू थी वो गई यहाँ पे हेलो एंड पंक्चुएशन के में मैंने डाल दिया नेम तो यहाँ पे नेम आ गया ठीक है अप्लाई एग्जीक्यूट इमीडिएटली आर्ग्यूमेंट एज एरे
So grid dot apply is a person, and we have pass array high, and apply क्या करता है, execute immediately argument as an array, ठीक, all execute immediately, apply क्या करता है, immediately करता है argument as an array, grid dot apply and person high question mark will score high zone, okay। तो जोन के अंदर वैल्यू कैसे आई, अप्लाई तो आ गया, पर्सन के अंदर हमने वैल्यू डाल दी, ठीक है, पर्सन पूरा ऑब्जेक्ट आ गया तो उसमें नेम आ गया, ठीक है, हाई, एंड ये चीज समझ नहीं आई मुझे कोड थोड़ा, आई थिंक आई जस्ट नीड टू कॉपी दिस कोड एंड आस्क द जीपीटी टू एक्सप्लेन मी दिस कोड, क्योंकि अप्लाई ब्लाइंड ये सब मैंने कभी यूज नहीं किया बाय द वे इन माय रियल प्रोजेक्ट्स, ओके, आई नेवर यूज दिस। Apply is a method in a JavaScript used to call a function. Apply is a method in a JavaScript used to call a function immediately and set the value of this manually, ठीक है। ये डॉट पर्सन क्या है, ग्रिड फंक्शन है, ठीक है, एंड पर्सन इज बिकम दिस इनसाइड द ring, एंड हाई यहाँ पे आ गया, हाई आर्ग्यूमेंट पास एज एन एरे, तो यहाँ पे क्या हो गया, सो इंटेंशनली इट वर्क लाइक पर्सन हाई एट दिस, कि अप्लाई कॉल फंक्शन सेट दिस, कॉल में कोमा, अप्लाई में एरे यूज हो रहा है, ओके। हेलो जोन, हाई जोन, एंड const grid dot find person, grid है, डॉट बाइंड पर्सन फंक्शन कॉल किया और पर्सन फंक्शन ने मुझे क्या दे दिया, हाय एंड जॉन, यहाँ पर आगे जो भी यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 भी समझ आ गया, बट स्टिल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, बट समझ आ गया कि कॉल क्या एग्जीक्यूट इमीडिएटली, अप्लाई विल बी एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली बट आर्ग्यूमेंट एज एन एरे, ठीक है। पर्सन, पर्सन इट इज एन एरे दैट वी हैव यहाँ पे क्रिएट किया था, वो हमने यहाँ डाल दिया, एंड यहाँ पे हाई था, हाई के अंदर दूसरी वैल्यू डाल दी, तो वो क्या हो गया, अप्लाई के अंदर फंक्शन कॉल हुआ और पंक्चुएशन के अंदर यहाँ पे नेम पास हो गया, तो हाई जोन यहाँ पे आ गया, ठीक है। एंड बाइंड विल बी रिटर्न अ न्यू फंक्शन, तो हियर इज अ फंक्शन वी हैव क्रिएटिंग ग्रिड डॉट बाइंड पर्सन, यहाँ पे पर्सन डालने के साथ जो जोन था वो इट विल बी हियर, एंड हाई एंड कॉमा डॉट, एंड हमारे अंदर जो हमने जो लिखा था वैल्यू वो ग्रिड किसके आ गई और वो हमें पे पास हो गई, ठीक है, समझ आ गया। So question number 18 is completed and now just moving to question number 19. And 19 का जो क्वेश्चन है वो हम थोड़ा करेंगे बट वी हैव टू जस्ट वेट अ फ्यू सेकंड्स बिकॉज थोड़ा बोल बोल के थोड़ा थक चुके हैं एंड आई जस्ट लाइक कि वी हैव गेटिंग अ लाइव 53 मिनट, सो आई विल बी कंटिन्यू इट्स जस्ट 4 to 5 मिनट, जस्ट वेट अ फ्यू सेकंड्स, फ्यू मिनट, ठीक है, आई विल बी जस्ट बैक सून, ठीक है, so just wait, okay, and this is question number, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। एंड बिफोर मूविंग आई विल जस्ट लाइक कि तब तक तुम क्या करो, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 हो चुका है एंड क्वेश्चन नंबर 19 इज हेयर, ठीक है, जब तक तुम इसको देखे यू कैन व्हाटएवर यू हैव अंडरस्टैंड दैट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी बैक इन 5 to 10 मिनट।
Guys, I am back, but here is something few problems, just like the awaits. I have simply recently I have received an email of online assessment, ठीक है? एंड उस ऑनलाइन असेसमेंट को मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा अभी कुछ अभी मतलब करना पड़ेगा स्ट्रीम के बाद ही, ठीक है? एंड आई डोंट डूइंग दैट असाइनमेंट ऑन द लाइव स्ट्रीमिंग, ठीक है? सो वंस आई विल बी माय असाइनमेंट विल बी कंप्लीटेड एंड इफ आई एम गेटिंग अ टाइम आई विल बी अलाइव अगेन, बट करेंटली आई विश कि मैं अभी नहीं आ सकता, अभी मतलब कंटिन्यू नहीं कर सकता स्ट्रीमिंग को, बिकॉज इफ आई एम जस्ट गेटिंग दैट असाइनमेंट टू अभी कर दूंगा, सो उसका जो रिजल्ट है वो मुझे कल तक पता चल जाएगा। सो अभी आफ्टर दैट आई विल बी जस्ट सिंपली फिनिश दैट स्ट्रीमिंग सेशन एंड आई विल बी कंटिन्यू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इफ आई एम गेटिंग अ टाइम और टुडे और टुमारो, ठीक है? सो सिंपली आई विल बी जस्ट close the streaming session. Thanks for watching the streaming session. And if you are still have any question, let me know in the comment section, and make sure you can just like and subscribe my videos, and like the video and subscribe the channel. And if you have any question, just join my Discord server and just ask me anything. Okay. I will be simply that finishing that simulation. Thanks for watching, guys. I will be back.